Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 11. Safety first. Baba, Assalamu alaikum, my dearest friend. Assalamu alaikum, mere aziz dost. Where were you yesterday? Kal tum kahan the? We had a terrific cricket match in the stadium. हमने स्टेडियम में एक ज़बरदस्त क्रिकेट मैच खेला था. आसिम, वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. आई कुड नॉट कम फॉर द मैच. मैं मैच के लिए नहीं आ सका बिकॉज क्योंकि आई टुक अ फर्स्ट एड क्लास यस्टरडे. मैंने कल फर्स्ट एड की क्लास ली थी. बाबर, रियली? वाकई? व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? व्हाट डिड यू लर्न? तुमने क्या सीखा? आसिम, फर्स्ट एड इज़ द हेल्प given to a sick or injured person. फर्स्ट एड किसी बीमार या ज़ख्मी शख्स को उस वक्त तक दी जाने वाली मदद है until full medical treatment is available, जब तक मुकम्मल तबी इलाज दस्तयाब न हो जाए. फर्स्ट एड is about using your common sense in ways that will keep that person safe without doing harm. फर्स्ट एड का मतलब है आम फहम इस्तेमाल करते हुए इस शख्स को महफूज रखना बग़ैर कोई नुकसान पहुंचाए. बाबर, यू मीन अ फ्रेंड हैज़ एन हादसा हो जाए और समवन कोलैप्सेस परहैप्स फ्रॉम अ हार्ट अटैक, या कोई दिल के दौरे की वजह से गिर जाए, then the first person there will be the first aider. तो वहाँ मौजूद पहला शख्स फर्स्ट एडर होगा और द पर्सन हु विल हेल्प द कैजुअलिटीज़ टिल हेल्प अराइव्स, या वो शख्स जो मदद पहुँचने तक मुतासरीन की मदद करेगा. आसिम, येस माय डियर फ्रेंड. हाँ मेरे अजीज़ दोस्त. बाबर, it's a great idea for older children and adults to do a first aid course. बड़े बच्चों और बालिगों के लिए फ़र्स्ट एड का कोर्स करना एक बेहतरीन ख्याल है, सो दैट दे नो व्हाट टू डू टू हेल्प अदर्स, ताकि वो दूसरों की मदद करना जाने. टेल मी मोर, मज़ीद बताओ. व्हाट एल्स डिड यू लर्न? तुमने और क्या सीखा? आसिम, a lot of stuff, बहुत सी चीज़ें. We were taught to have a first aid kit at home, school and workplace. हमें सिखाया गया कि घर, स्कूल और काम की जगह पर एक फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए. बाबर, what is a first aid kit? फर्स्ट एड किट क्या है? What should I keep in my first aid kit? मैं अपनी फर्स्ट एड किट में क्या कुछ रखूँगा? आसिम, a basic first kit में contain बुनियादी फर्स्ट एड किट में मंदरज झेल चीज़ें हो सकती है. एडहेसिव प्लास्टर्स इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, मुख्तलिफ साइज़ और शक्लों के झपकने वाले प्लास्टर. स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्टेराइल गैस ड्रेसिंग्स, छोटी, दरमियानी और बड़ी जरासीम से पाक गॉज. एट लीस्ट 2 स्टेराइल आई ड्रेसिंग, कम अज़ कम 2 जरासीम से पाक आँख की फटिया. ट्रायंगुलर बैंडेजेस, तिकोनी फटिया. क्रीप रोड बैंडेजेस, क्रीप रोड फटिया. सेफ्टी पिन्स. डिस्पोजेबल स्टेराइल ग्लव्स, एक बार इस्तेमाल होने वाले जरासीम से पाक दस्ताने. ट्वीज़र, चमटी. सीज़र, कैंची. मेडिसिन, अद्वियात. Bobas, when and where do you use
فرسٹ ایڈ کٹ. فرسٹ ایڈ کٹ کب اور کہاں استعمال ہوتی ہے؟ Make sure you know how to properly use all the items in your kit. یقینی بنائیں کہ آپ کو کٹ میں موجود تمام اشیاء، خاص طور پر especially the medication، خاص طور پر ادویات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا آتا ہے. Train others in your family to use the kit. اپنے خاندان کے دیگر افراد کو بھی کٹ استعمال کرنا سکھائے. You may be the one who needs first aid. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہی فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑ جائے. You are right. تم صحیح کہہ رہے ہو. Just having a first aid kit is not enough. صرف فرسٹ ایڈ کٹ رکھنا کافی نہیں ہے. One must know how to use it. اسے استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. Exactly. بالکل. فرسٹ ایڈ از آل اباؤٹ what to do in emergency situation. فرسٹ ایڈ ہنگامی حالات میں کیا کرنا ہے اس بارے میں ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر what should you do if you burn yourself on a hot stove. مثال کے طور پر اگر آپ گرم چولہے پر جل جائے تو کیا کرنا چاہیے. My grandma says that you should put butter on a burn. میری دادی کہتی ہے کہ جلن پر مکھن لگانا چاہیے. No, that's the worst thing to do. نہیں، یہ سب سے برا کام ہے. بابر: اوہ، then maybe you should put ice on the burn. اوہ، پھر شاید جلن پر برف رکھنی چاہیے. عاصم: No, the first thing you should do when you get a minor burn is run cool water over the burn area for about 20 minutes. معمولی جلن کی صورت میں سب سے پہلے متاثرہ جگہ پر ٹھنڈا پانی تقریباً 20 منٹ تک بہائے. لیٹر بعد میں cover it with a sterile non-adhesive bandage or clean cloth. اسے جراثیم سے پاک غیر چپکنے والی پٹی یا صاف کپڑے سے ڈھانپ دے. بابر: how about this? عاصم: how about this? What should you do if someone is choking? اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی دم گھٹ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے. بابر: that's easy. یہ تو آسان ہے. hit them on the back. ان کی پیٹھ پر مارو. عاصم: no, you might lodge the object in their throat more and make things worse. نہیں، اس سے چیز ان کے گلے میں اور پھنس سکتی ہے اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے. First, you should make sure they are really choking. سب سے پہلے یقینی بنائیں کہ وہ واقعی دم گھٹ رہے ہیں. If they can talk or cough, that means that air is getting through and you should just let them cough. اگر وہ بات کر سکتے ہیں یا کانس سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا راستہ پا رہی ہے اور آپ کو صرف انہیں کانسنے دینا چاہیے. If they can't talk or cough, you should do the abdominal thrust. اگر وہ بات نہیں کر سکتے یا کانس نہیں سکتے تو آپ کو پیٹ کا دباؤ abdominal thrust دینا چاہیے. بابر: how do you do that? یہ کیسے کیا جاتا ہے. عاصم: you wrap your arms around the person and quickly pull in and up with your fist. آپ اپنی باہوں کو اس شخص کے گرد لپیٹے اور اپنی مٹھی سے تیزی سے اندر اور اوپر کی طرف کھینچے. The air that's forced off dislodges the object. زبردستی اوپر آنے والی ہوا چیز کو نکال دیتی ہے. Similarly, what would you do if someone cuts his arm and is bleeding really badly? اسی طرح اگر کسی کی بازو کٹ جائے اور شدید خون بہہ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے. بابر: panic.
घबराहट. आसिम, take a deep breath to calm down a little. थोड़ा सा पुरसकून होने के लिए गहरा सांस ले. Call on the emergency phone number for help. हंगामी नंबर पर मदद के लिए कॉल करें. In the meanwhile, you should put a cloth over the wound, apply pressure and elevate it. और इस दौरान ज़ख़म पर कपड़ा रख के दबाव डालें और इसे ऊंचा करें. बाबर, ग्रेट, बहुत अच्छा. माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड एंड एल. मेरे दादा उम्र रसीदा और बीमार है. गॉड फॉरबिड इफ़ ही गेट्स अ हार्ट अटैक. खुदा न करे अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए. व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? आसिम, कॉल मेडिकल हेल्प as soon as possible. जितनी जल्दी मुमकिन हो तभी मदद के लिए कॉल करें. In the meanwhile, इसी दौरान you need to ease the strain on his heart. आपको उनके दिल पर दबाव कम करने की ज़रूरत है. So make him as comfortable as possible. इसलिए उन्हें जितना आरामदेह हो सके बनाए. A half sitting position, आधे बैठने की पोजीशन, with his head and shoulders supported, जिसमें सर और कंधों को सहारा दिया जाए. एंड his knees bent is best, और घुटने मोड़े हुए हो बेहतरीन है. बाबर, दैट इज़ गुड इंफॉर्मेशन. ये अच्छी मालूमात है. अदरवाइज वी नॉर्मली मेक द पेशेंट लाई डाउन. वरना हम आम तौर पर मरीज़ को लेटा देते हैं. प्लीज़ टेल मी अनदर थिंग. बराए करम मुझे एक और बात बताइए. Often when we play in sun or accidentally hurt a person, अक्सर जब हम धूप में खेलते हैं या किसी को हादसाती तौर पर चोट लग जाती है, the nose bleeds, तो नाक से खून बहने लगता है. What should be done in that case? ऐसे में क्या करना चाहिए? आसिम, set the person up straight and drop their head slightly forward. शख्स को सीधा बिठाइए और उनका सर थोड़ा सा आगे झुकाए. अप्लाई फिंगर एंड थंब, उंगली और अंगूठे से प्रेशर ऑन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स बिलो द ब्रिज ऑफ द नोज फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. नाक की हड्डी के नीचे नरम हिस्से पर कम से कम 10 मिनट तक. बाबर, वाह, देयर इज सो मच टू लर्न. बाबर, वाह, यहाँ बहुत कुछ सीखने को है. आई थिंक आई नीड टू टेक दिस क्लास. मेरे ख्याल से मुझे ये क्लास लेनी चाहिए. आसिम, एवरीवन शुड टेक अ फर्स्ट एड क्लास. आसिम, हर एक को फर्स्ट एड की क्लास लेनी चाहिए. बाबर, थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. अल्लाह हाफिज़. तमाम मालूमात का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. आसिम, अल्लाह हाफिज़. आसिम, अल्लाह हाफिज़.